Hey everybody, we're live and in stereo. I've started the recording. I'll give you a quick recap of what we've done so far. So far we started off with the concept of moles, and we said that moles is not something, very unique and not something that you should be scared of. It's literally is a unit of representation. It represents a number, and which is 6.02 into 10 raised to the power 23, and this can literally be anything. Then a mole says, hey, unlike a dozen only represents a number which is 12, right? When we say I need 1 dozen eggs, you get 12 eggs. When you say I need 1 dozen books, you get 12 books. But a mole says every time you say I need 1 mole of something, you can get a number which is 6.02 into 10 to the power 23. You can also represent the volume of any gas at room temperature and pressure. Remember, it's only a gas, right? Only for a gas. And that's going to be how much? 24 liters, aka 24 decimeter cube, or you could say 24,000 centimeter cube or 24,000 milliliters, because decimeter cube literally is the British English for liters and centimeter cube literally is the British English for milliliters. क्योंकि हम गुलाम हैं ब्रिटिश के पेपर्स देते हैं, तो we are not going to use the word liter or or milliliter. We'll be using decimeter cube and centimeter cube, right? And then obviously mole says I also represent something known as molar mass. What is molar mass? It's the mass of 1 mole of any substance. किसी भी चीज के 1 mole का mass अगर आप measure करें, that's molar mass, which a mole represents. So for example, I say, hey, you have 1 mole of sodium. What's going to be the molar mass of maybe sodium? What's going to be the molar mass of sodium? It's written in the periodic table. You can literally go to your periodic table, and the molar mass is the bigger number for now. So 23 gram per mole is the molar mass of sodium. What does this mean? This means when you have 1 mole of sodium, which effectively is 6.02 into 10 is power 23 atoms of sodium, and you put it on a top pan balance. आप इसको एक balance पे रखते हैं और इसको आप कहते हैं कि अच्छा ये कितना weigh करेगा. So it practically weighs 23 grams. How do we know that? We do that practically, and it's given in your periodic table. So for example, if I say, hey guys, carbon dioxide, what's the molar mass of carbon dioxide? Carbon in the periodic table is 12, oxygen is 16, you have two O's, times it by 2, add them together, that's 44. But not just 44. What is the unit? It's 44 gram per mole, which means if I take 1 mole of carbon dioxide and I weigh it on a top pan balance, it's gonna weigh exactly 44 grams. How much is 1 mole of carbon dioxide? It's practically 6.02 into 10 raised to the power 23 molecules of carbon dioxide, right? Or you could also say 1 mole of carbon dioxide is 24 liters of carbon dioxide, or 24 decimeter cube. So if I take 24 decimeter cube of carbon dioxide and I weigh it on a top pan balance, it's gonna weigh exactly this much. If I take these many molecules of carbon dioxide and I weigh it on a top pan balance, it's gonna weigh exactly this much. So these are the three things that a mole represents. And then we said, hey, hold up. So now I can practically derive three formulas from this. What are the three formulas I can derive, everybody? Well, I can say if I want to find the number of anything, if I want to find the number of atoms, if I want to find the number of molecules, if I want to find the number of ions, if I want to find the number of carpets in something, what am I going to do? I'll just take the moles and I'll multiply it by 6.02 into 10 raised to the power 23. We represent mole with n, right? So what am I going to do? I'll take n, I'll take the number of moles and times it by 6.02 into 10 raised to the power 23. This is going to give me the number. It can be atoms, ions, molecules, whatnot. And if I want to find the volume of any gas at room temperature and pressure, I'll take the moles and I'll just multiply it with 24 dm cube, or 24,000 centimeter cube, right? And then please, for crying out loud, please, the mole does not represent the concept of MR or AR. बेटा मैं पढ़ा दूंगा MR AR क्या होता है अब्दुल्ला नासिर साहब. I'll teach it to you in chapter number 2. Please, your teachers are teaching it to you the wrong way around. I will show you the syllabus. At the end of this class, I will show you the syllabus, और syllabus में अगर MR AR लिखा हो तो मेरा नाम बदल देना यार, please. तो teachers को खुद नहीं आता, इसलिए मैं आपको कहता हूँ गलत concepts ना पढ़ें. तो a mole represents molar mass, right? So if I want to find the mass of anything, what am I going to do? I'll take the moles and I'll multiply it by the molar mass. That's how I'll calculate the mass of any substance. So what I'm going to do, I can take the moles and times it by the molar mass to calculate the mass of any substance. And we did this in quite a lot of detail in the last classes. Let's do a few questions
with regards to these three things, right? So I can say, hey, volume equal mole times 24. Sir, how do we then calculate molar mass? From the periodic table, Amna Khan. Molar mass is given in the periodic table. I've asked everyone to have a print of the periodic table right next to you. So if I say, hey, what's the molar mass of H2SO4? What's the molar mass of H2SO4? Hydrogen in the periodic table is 1. Times it by 2 because you have 2 hydrogens. S is sulfur. Sulfur in the periodic table is 32. So you add 32. Oxygen is 16 in the periodic table, and because you have 4 atoms of O, you times it by 4, you get, I believe you get 98. So 98 gram per mole is the molar mass. I'll prove it to you, and then you guys can challenge your teachers as well. Those of you who are interested in proving it, I'll prove it at the end of this class. And then you can go ask your teachers and challenge them and take the syllabus with yourself, please. Don't be confused, Amna. It's pretty simple. It's the same number which is written in your periodic table. The bigger number in your periodic table is effectively your molar mass. For now, just understand that, because we'll focus back on your basics later on when we start off with chapter 2, chapter 1, and so on and so forth, right? For now, you just need to understand that if you want to calculate the mass of anything, you'll take the moles and times it by the molar mass, not with the AR, not with the MR. बट वट यू नीड टू रियलाइज इज, अगर मैं इसको कहूँ कि इसका MR कितना है, जो आप अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको कहने कह कि थक गया हूँ कि भूल जाएं जो टीचरों ने पढ़ा है, बट लेट्स सपोज यू कैलकुलेट द MR, इट्स ऑल्सो गोना बी 98. So that's why your answer is always the same. If you multiply it with MR, if you multiply it with AR, if you multiply it with molar mass, you will also get the same answer. इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा सब्र कर लें, कर लेंगे, पढ़ लेंगे. आमना गोली मारे MR क्या है, गोली मार. ये वो बच्चे कह रहे हैं बार बार जिन्होंने आधी आधी केमिस्ट्री पढ़ी है, तो वो मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, भूल जाए कि MR क्या है फिलहाल के लिए. ठीक है, चलिए लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस एंड देन वील फोकस ऑन द अदर कॉन्सेप्ट. तो हम कुछ सवाल कर लें. लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस पीप्स. कुछ सवाल करते हैं. लेट मी जस्ट ऐड द PDF file. Okay, let's start doing. I hope you guys have printed this out. Okay, so it says, hey, find the moles of, okay, first let's talk about simple questions. So can you guys, let's calculate the moles. You have 8 grams of H, calculate the moles. You have 4 grams of H2, calculate the moles. You have 16 grams of carbon dioxide, calculate the moles. Let's do this, guys. Let's do this. So I'm given grams, and I know that grams is obviously mass. So how do I connect mass to moles? I say, hey, if you want to calculate the mass of anything, you'll take the moles and you'll multiply it with the molar mass. Now you're already given mass. What is the mass? That's 8 grams. So I'm given the mass, which is 8 grams. I need to calculate the moles. What is the molar mass for H? Molar mass for H is 1, right? So I'll say, hey, n multiplied by 1. N is equal to 8 divided by 1. You're going to get 8 moles. Done. So 8 grams of H contains 8 moles of H. Now if I want to calculate the moles in this case, I'll say, hey, again, you're given mass, so I'm going to use this formula. Mass equals mole times molar mass. Mass is given 4 grams. Moles I have to calculate. Molar mass of hydrogen is how much? Go to the periodic table. Hydrogen is 1, but since you have 2 hydrogens, you times it by 2. So n times 2. N is equal to 4 divided by 2. That's 2 moles, sir. Finished. Let's talk about carbon dioxide. You've been given 16 grams of carbon dioxide. How do you connect mass to moles? Well, we say if you're given mass, you can calculate the moles by saying, hey, mass equals mole times molar mass. How much is the mass? 16 grams. Moles I have to calculate. Molar mass for carbon dioxide, please calculate it from the periodic table. 12 plus oxygen is 16, times it by 2. What do you get? 44 gram per mole. So n into 44. N is equal to 16 divided by 44. What do we get? Whatever we get. Right? Okay, let's suppose I say you have 3 moles of sodium, find the mass. You have 4 moles of sodium, find the mass. You have 6 moles of carbon dioxide, find the mass. Find the mass, find the mass, find the mass, and then also find the volume, and find the volume, and then also find the number of particles, which in this case are atoms. Find the number of
particles, which in this case are atoms, and carbon dioxide is a molecule, so find molecules of CO2. Can everybody calculate this, please? Let's start. So 3 moles of sodium. Let's talk about this. I want to calculate the mass. Well, mass equals mole times molar mass. Mass, I have to calculate. How many moles do you have? 3. Molar mass of sodium. We'll go to the periodic table. That's 23. So 3 times 23, what does that give me? 3 3s are 9, 3 2s are 6, 69 grams is the mass of 3 moles of sodium. Effectively, what this means is, अगर आपके पास 3 moles of sodium होंगे, it's gonna weigh 69 grams. Okay, 4 and now it says calculate the volume. So V is equal to N times 24 dm cube, right? And calculate the volume in dm cube and in cm cube, both. So moles कितने हैं सोडियम की? 3 multiplied by 24. What do we get? What do we get? 72. Oh, you dumbos, I've said this in the last class. This is absolutely wrong. Sodium is a solid, it's not a gas, and a mole does not represent the volume of a solid, liquid, aqueous solutions. It only represents the volume of a gas. So you can't represent it. Okay, next, find the atoms. How do you find the atoms? Well, if I want to find the number of particles, I'll take the moles times it by 6.02 into 10 to the power 23. Moles कितने हैं sir? 3 moles. 3 times 6.02 into 10 is power 23. What do you get? Atoms of sodium. Yeah, whatever. Okay, we're done with this. Next, 4 moles of sodium. You guys can calculate it on your own, but obviously you can't calculate the volume. Then 6 moles of carbon dioxide. 6 moles of carbon dioxide. Let's calculate the mass, sir. Mass equals mole times molar mass. You have to calculate the mass. Take the mole times it by the molar mass. Molar mass of carbon dioxide is 44 gram per mole. So you're gonna multiply by. How do you get 44? Man, come on. Go to the periodic table. Carbon is 12, oxygen is 16. Times it by 2. Add them together. You get 44 gram per mole. Yeah. So 6 times 44. What do you get? 264. Great. Okay. Sir, I am still confused about MR and AR. Khuda ka khauf kare, I'll teach you MR and AR in chapter number 2. I can't teach you the concept of MR and AR. It requires a whole class for it, right? Then you will understand the difference. For now, just know molar mass, MR, AR सब कुछ एक ही चीज़ है. बस सिर्फ यूनिटों का फ़र्क है. Molar mass is gram per mole. The other one is molecules equals this MR molecular. So we just need to do formula depending on what's okay. Great. Okay, moving on. Let's calculate the molecules of carbon, volume of carbon dioxide. Volume equals mole times 24 dm cube. Moles कितने? 6 times it by 24. What do you get? 114 dm cube. What if I want it in centimeter cube? What do? 114 and 3 zeros, not 00, 3 zeros, because if you want to find the volume in centimeter cube, you're going to times it by 24,000 centimeter cube, not by 24. Dot, did you take the first class, man? Did you take the first class? Did you take class number uno? Yes, no? Great, awesome, amazing. Please take class number uno. It's uploaded onto YouTube. You'll get it. Thank you very much. Goodbye. Watch the other class onto you. It's uploaded onto YouTube. Then watch this class recording. This will also be. That's why you're confused, man. This is not the first class. We already took the first class. Goodbye. Take care. Bye. अच्छा जी, तो ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया. उसके बाद फाइंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मॉलिक्यूल्स इक्वल मोल टाइम्स 6.02 into 10 raised to the power 23. कितने मोल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के? 6 multiplied by 6.02 into 10 is power 23. What do you get? How many molecules do you get? कितने molecules आ रहे हैं CO2 के? 3.612 into 10 is the power 24. These are the molecules of CO2. What if I say calculate the atoms, the number of atoms in carbon dioxide? मुझे एक बात बताएं, you've calculated the molecules. How many atoms are there? You have one atom of C and you have two atoms of O. So if I want to calculate the number of atoms in
these many molecules of carbon dioxide, what am I going to do? What should I multiply it with? Well, you have these many molecules of carbon dioxide, but in each molecule you have one C and two O's. So in total, in each molecule of carbon dioxide you have three atoms, एक C का दो O के. So if I want to calculate the atoms in carbon dioxide, if I want to calculate the atoms in 6 moles of carbon dioxide, once I calculate the molecules, then obviously I'll multiply it by 3, because you have three atoms in a single molecule. So what do you get? What's the answer? 8 into 10 is about 25. Okay, this is one way of doing it. These are the number of atoms in 6 moles of CO2. Done? Atoms of CO2. Okay, what if I say you have 6 moles of carbon dioxide and I want you to calculate the atoms? 6 moles of carbon dioxide, I want you to calculate the atoms. Can everybody do it? Well, I'll say, hey, it's carbon dioxide and carbon dioxide is a molecule. So first I'll find the molecules of carbon dioxide, which is, I'll take the moles times it by 6.02 into 10 to the power 23. Moles kitne? 6 multiplied by 6.02 into 10 is power 23. What do we get, everybody? And these are what? What is this? Yes, yes. What is this? These are the molecules of CO2. Please remember, these are not the atoms of carbon dioxide, these are the molecules of carbon dioxide. Now, if I want to calculate the atoms, what will I do? What will I do? Atoms of carbon dioxide, what should I do? Well, in one molecule, you have one C and two O's. So I'll take this number and I'll multiply it by 3. Done? What do I get? The same thing. What do I get? 1 point? 1 point? Okay, awesome, awesome. These are the number of atoms of CO2. Okay, what if I don't like this way? What if I say I want to do it in another way? Well, I can obviously do it because it's just math. There are a billion ways of doing it. I want to calculate the atoms of carbon dioxide. So I can say in 6 moles of carbon dioxide, you have 6 moles of C. You have 6 moles of C. Can I say that? You have 6 moles of C. And how many moles of O do you have? 6 times 2. You have 12 moles of O. So what are the total number of moles? Total number of moles 18 moles of atoms. इतने atom के moles है मेरे पास. These are the number of moles of atoms in carbon dioxide. In 6 moles of carbon dioxide, you have these many moles of atoms. Now, I've got the moles of atoms, so I can calculate the number of atoms. I'll take the moles, times it by 6.02 into 10 raised to the power 23. What are the moles? 18. 18 multiplied by 6.02 into 10 is power 23. What do I get? So, obviously, it's just mathematics. It's your choice. Either you do it logically like this, or you do it in this particular manner. What I would suggest is this right here. I recommend this because your syllabus also recommends this, because you also need to understand that 6 moles of carbon dioxide has how many moles of atoms? It has 18 moles of atoms. How do I know this? This is the hidden relationship. Che into 1, you have 6 moles of C. Che into 2, you have 12 moles of O. So in total, you have 18 moles. What if I say you have 6 moles of carbon dioxide and I want you to calculate the atoms. First, I want you to calculate the moles of O. The moles of O. Look at my question. I want you to calculate the moles of O, and then I want you to calculate the atoms of O in 6 moles of carbon dioxide. How do I calculate the moles of O? How do I calculate? Sir, 6 times 2. You have 6 moles of carbon dioxide. How many moles of O do you have? 6 times 2. You have 12 moles of O. Easy peasy. Now you can also calculate the atoms of O. Atoms of O equals 12 times 6.02 into 10 raised to the power 23. Done, dusted. What do you get? Whatever. Nobody cares. Let's do questions now. Find the number of atoms in molecules. Okay, wait. I want to check this out. Wait, guys. Let's check. Why is this? Oh, awesome. So, awesome. Love it. Just one sec, peeps.
Let's start. Let's start solving. I hope you all have printed your worksheets. Sir, let's start. Let's start with these questions right here. यार वो तो इसमें है ही नहीं, रिमूव शिमूव हो गए क्या? 2.0 2.1 तो 2.1 2.2 किधर गए? क्या बकवास है गाइस. वन सेक, सॉरी, वन सेकेंड. Find the number of atoms in molecules. Find the number of moles of atoms in molecules. So yeah. Guys, just 1 second, please. Let me just add this. 1 second, please, peeps. Give me 1 sec. Sir, what if it says only find the atoms of O? तो भाई फिर आप डायरेक्ट करो ना. 6 moles of carbon dioxide, find the atoms of O. So what am I gonna do? First, you need to find the moles of O. 6 times 2, you have 12 moles of O. And then you find the atoms of O. This worksheet has been shared in the group long ago, man. Long ago. मैं कोई ग्रुप चेक ही नहीं करता यार. ये हाल. Sorry guys, I'm a little cranky because I'm sick. Yeah, I know it's not justifiable, but who cares? Number of atoms, number of molecules. Okay, here. Let's start with this. Case 2.2. Find the moles of carbon atoms. Find the moles of carbon atoms is in 3 moles of carbon dioxide. Sir, 3 times 1. You have 3 moles of C. Sir, find the moles of oxygen atoms. Find the moles of oxygen atoms in 5 moles of carbon dioxide. 5 times 2. 10. 10 moles of what? Of O. What if I say how many moles of C? 5 times 1. 5 moles. How many total moles of atoms? How many total moles of atoms? 15 moles of atoms. Done? Find the total moles. Okay, find the total moles of atoms in 9 moles of carbon dioxide. Sir, 9 times 1, you have 9 moles of C. Sir, 9 times 2, you have 18 moles of O. Total moles, 27. Moles of atoms. Find the moles of chloride ions in 3 moles of MgCl2. 3 times 2. 3 times 2 9 होता है. वाह बेटे वाह, good. 6 moles of chloride ions. वाह 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 वाह. अच्छा, find the moles of Mg. 3 times 2. Sorry, 3 times 1. 3 moles of Mg. Yeah. Find the moles of Mg2 plus ions in 5 moles of MgCl2. 5 times 1. 5 moles of Mg2 plus. Find the moles of O2 minus in 6 moles of 6 times 3. करता जाऊं कि बस कर दूं? समझ आ गई? Yes, no? करता जाऊं? Find the total moles in 12 moles of H2SO4. 12 times 2. 12 times 2, that's 24 moles of H. 12 times 1, that's 12 moles of S. 12 times 4, that's 48 moles of O. Add them, what do you get? 84, sure? 100%? मुझे तो 84 नहीं लग रहा. 40, 50, 60, 70, 78, 82. यार ये क्या है यार? बा बेटा ऐसे ही आया हूँ. Done? Moving on. Find the number of atoms in molecules. करें जी, करें. कैसे आ रहा है? 40, 50, 67, 78. चलो फिर मेरी गलती. अच्छा मैं 4 ऐड कर रहा हूँ. 784 है. सही है. थैंक यू. और आई एम द फाइनेंस गाय. खैर हमारा सारा काम एक्सेल पे होता है, मैं कोई कैलकुलेशंस नहीं करता. फाइंड द मोल्स, हमने वैसे भी कम ही कैलकुलेशन शो करनी होती है.
Find the moles of carbon. अच्छा, find the moles of carbon dioxide in 3 moles of CO2 and then find the number of carbon atoms. Carbon atoms निकालने हैं, साफ सी बात है. 3 times 1, 3 times 1, you have 3 moles of C. You have 3 moles of C and now you have to find the atoms. तो atoms कैसे निकाले? Atoms equal mole times this number. This pathetic little number. 3 times 6.02. Whatever the answer is. Nobody cares. Thank you. Find the moles. Thank you for helping. Find the moles of oxygen atoms in 5 moles of carbon. अच्छा, oxygen moles find. अच्छा, find the moles of oxygen atoms. कितने हैं? 5 times 2, 10 moles. और कह रहे find the number. 10 moles of O आ गए. अब atoms निकालें. मजे की बात बताऊं, ये वाहिद कॉन्सेप्ट है जो बच्चों में इतने इसमें उलझे होते हैं कि पता ही नहीं लगता मॉलिक्यूल्स क्या है, एटम्स क्या. आसान हो गया. 10 times 6.02 into 10 is in 2018 I believe the examiner wrote कि this was one of the questions that many students did wrong. examiner report में ये क्या है यार, इसमें क्या है जी. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालने हैं तो फिर तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूल, सो 5 times 6.02 into 10 is power 23. यही है ना डायरेक्ट, फिर तो डायरेक्ट ना. डायरेक्ट करने जाहिर सी बात, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूल, सो इफ यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यू विल टेक द मोल्स एंड टाइम्स इट बाय दिस नंबर. वी हैव डन दिस मैन, दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. If you want to find the number of carpets, blah blah blah. Okay, find the total moles of atoms in 9 moles of carbon dioxide. Total moles of atoms. Total moles कितने? 9 times 1 is 9 plus 18, that's 27 moles. अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ. 27 moles of atoms. What is the number? 27 times this pathetic number. Find the moles of chloride ions in 3 moles of MgCl2. 3 times 2 is 6 and then ions. So 6 times multiplied by 6.02 into 10 is power 23. Done? ये बाकी कर लेंगे, करने की ज़रूरत है, ये कर लेंगे. इनमें फ़र्क आप चैप्टर नंबर 3 में सीखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में. जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह सीख लेंगे कि एटम, ये इसको मैं आइंस क्यों कह रहा हूँ. फॉर नाउ जस्ट नो, मैं जो जो लिख रहा हूँ तो जी जी मोहम्मद ज़रार अलीपुर. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही है यही है. फ़र्क आपको, हाँ, calculation is the same. You just need to know the difference between what an ion is, what a molecule is, what an atom is, and because teachers have done a very pathetic job at this, I will have to fix this in chapter number 2. And this is a lesson for me that I will always start from chapter number 1 next time I take the trial classes, because this was an experiment starting from moles. To maybe I was of the idea that students would have a concept of atoms, molecules and ions. ये फ़र्क तो बच्चों को पता होगा, लेकिन I was wrong. तो खैर वो इंशाल्लाह चैप्टर 1-2 से मैं अगले साल जब पढ़ाऊँगा ना, तो चैप्टर 1 से बच्चे मुझे बला जितना कहें कि मोल्स पहले पढ़ा दें, खुदा की कसम मैंने नहीं पढ़ाने, पहले मैंने बेसिक्स ही पढ़ाने, लेकिन ये सारा पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना. सब कुछ क्लियर हो जाए, फिर जब आप इसको देखोगे आप कहोगे यार सर तुसी ग्रेट हो. अच्छा करते जाए सवाल. Should we do more questions? Start. Find the mass. देखिए सिंपल सी बात है. Just remember one thing. No, organic chemistry is totally different. You don't need any basics for organic chemistry. Just remember one thing. देखिए mole represents three things. It represents three things. What does it represent? It represents a number which is 6.02 into 10 is power 23. It represents the volume of a gas at RTP, that's going to be 24 decimeter cube or 24,000 cm cube. And it represents the molar mass, which for every element or molecule is different, right? वो periodic table से calculate होता है. देखिए simple सी बात, ये mind map बना ले जहन में. If you want to calculate the volume of any gas, you take the mole multiplied by 24 dm cube or 24,000 centimeter cube if you want to calculate it into centimeter cube. If you want to find the number for any element, any molecule whatsoever, you take the moles and times it by 6.02 into 10 is power 23. And if you want to find the mass, you take the mole and times it by the molar mass. These three are your relationships. Mole or molar mass, mole और ये number, mole और ये volume. That's it. इसकी बेस पे आपकी पूरी chemistry चल रही है. Okay. Finding the mass. So if I want to find the mass, what am I going to do? Mass equal mole times molar mass.
मास कितना है निकालना है, मोल्स दिए हुए हैं 6.3। मोलर मास ऑफ आयोडीन गैस, आयोडीन गैस है I2 होता है, I2 पीरियोडिक टेबल में प्लीज देखें I2। व्हाट इज I इन द पीरियोडिक टेबल, चैप्टर ग्रुप 7 में है, पीरियोडिक टेबल में देखिए ग्रुप 7 में I is 127 and because it's 2 you multiply it by 2, that's the molar mass। हाँ जी बताएं, आंसर खुद निकाल लीजिएगा। 127 ही है ना, चेक द पीरियोडिक टेबल यार, पीरियोडिक टेबल चेक कर लेना, मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो भाई, ये 127, अच्छा है कि मुझे याद है, रटे हुए हैं मुझे तो। फाइंड फाइंड द रिलेटिव मोलेकुलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ ये mr क्या बोला है, मोलर मास ही है, इट्स द सेम थिंग एज, जब आपसे एग्जामिनर कहेगा फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ही इज गिवन यू द डिटेल्स फॉर मोल्स एंड ही सेज फाइंड द रिलेटिव मोलेकुलर मास, फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास, उसको वो कहता है AR MR। ये आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं है क्या है, आपने कहने कि सर ने कहा था इसको मोलर मास ही कहना है, बस सिर्फ यूनिट बदल जाएगा। सो जी मोलर मास निकाले, रिलेटिव मोलेकुलर मास की जगह क्या निकाले, मोलर मास। एक मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है, पीरियोडिक टेबल में देखें ना, 44 ग्राम्स पर मोल, मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज 44 ग्राम्स। अब कह रहे फाइंड AR, तो AR या MR, फाइंड द रिलेटिव मोलेकुलर मास, आपने लिखना है 44, हाँ आपने लिखना है 44, बट इंस्टेड ऑफ ग्राम पर मोल यू जस्ट हैव टू राइट AMU, इसका यूनिट अलग होता है बस, बाकी नंबर सेम है, इसीलिए आपकी टीचर AMU। और ये क्या होता है चैप्टर 2 में पढ़ा दूंगा, चैप्टर 2 में पढ़ा दूंगा ये AMU क्या होता है। फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड व्हेन द एग्जामिनर आस्क्स यू टू कैलकुलेट द रिलेटिव मोलेकुलर मास, जो जिसको वो MR कहता है, इफ ही आस्क्स यू टू कैलकुलेट द AR, इफ ही आस्क्स यू टू कैलकुलेट द MR और मोल्स की इंफॉर्मेशन गिवन होती है, तो आपने मोलर मास निकालना है विच इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, और यू कैन कैलकुलेट दैट फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। उसका यूनिट बदल देना है, ग्राम पर मोल की जगह AMU डाल देना, दैट्स इट। इसमें फर्दर फर्क चैप्टर 2 में आपको समझाऊंगा। ओके, फाइंड द मोल्स ऑफ 200 ग्राम्स ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स। ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स Br2 होता है कि Br होता है? जी बिल्कुल मोहम्मद वकास साहब, यू आर राइट, AR इज फॉर एटम्स, MR इज फॉर मॉलिक्यूल। हाँ जी, Br2 है कि Br है? देखिए मॉलिक्यूल क्या होता है, फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, मॉलिक्यूल्स भी हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, एक से ज़्यादा एटम के साथ कोई चीज़ बॉन्डेड होना तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है। अब Br जो है ये अकेले है बेचारा, दिस इज नॉट अ मॉलिक्यूल, इट्स एन एलिमेंट, राइट, इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स। बट अब Br2 है, दो हो गए, एक से ज़्यादा है ना, दो हो गए, बस इसको आप मॉलिक्यूल कहेंगे। सो ब्रोमीन मॉलिक्यूल मीन्स इट्स Br2 राइट हियर। सो फाइंड द मोल्स, मोल्स निकाले, मास इक्वल मोल टाइम्स मोलर मास। मोल्स फाइंड करें सर, मास गिवन है 200 ग्राम, मोल्स निकालने हैं। मोलर मास कितना है सर, Br2, Br कितना है पीरियोडिक टेबल में, 80, तो Br2 क्या है, 80 टाइम्स 2, तो 200 डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पे डिवाइड हो जाएगा, यही पढ़ाते हैं मैट्रिक में, कैलकुलेट कर दीजिएगा। फाइंड द मोल्स ऑफ 200 ग्राम्स ऑफ ब्रोमीन एटम्स। अब Br2 है कि Br है, अब Br2 की बात हो रही है कि Br की बात हो रही है, ऑब्वियसली बिकॉज इज टॉकिंग अबाउट ब्रो, अब Br की बात हो रही है। तो सर मोल्स निकालें, मास इक्वल्स, मास गिवन है ना, मास फाइंड करने हैं, गिवन है, मास इक्वल मोल टाइम्स मोलर मास। मास कितना है, 200 बटा 200, मोल निकालने हैं, Br है 80 है, भाई ये फ़र्क है, इधर बच्चे गलती कर जाते हैं और तो कुछ भी नहीं है, निकालिएगा। डन, और करूं कि करने खुद। हाइड्रोजन एटम्स, H2 की बात हो रही है कि H की, बताएं जी। अल्लाह हाफिज़ रामीन, एज की बात हो रही ब्रो, हाइड्रोजन एटम्स की बात, राइट। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मोल्स, मास गिवन है ना, तो मास इक्वल मोल टाइम्स मोलर मास। मास सर 8 ग्राम है, मोल निकालने हैं, मोलर मास कितना है 1, n इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 1 विच इज 8। डन, ये बाकी आप लोग कर सकते हो खुद। फाइंड द मास ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ O2। सर मास निकाले, मास इक्वल मोल टाइम्स मोलर मास। मास कितना है सर, निकालना है, मोल्स 2.5, मोलर मास ऑफ O2, O नहीं है, O2 गिवन है, तो O कितना होता है 16, और यू हैव 2 O's, तो टाइम्स इट बाय 2, 32 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास है, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 32, जो भी आया फिर।
and then you guys can calculate all of these things. अच्छा, chlorine molecules, find the mass of 4.2 moles of chlorine molecules. Cl2 की बात हो रही है कि Cl की बात हो रही है? Awesome. Chlorine atom, Cl की बात हो रही है, Cl2 की बात हो रही है? Obviously. So will the answer be different for these two? Obviously it'll be different, right? Because in this case when you calculate mass equal mole times molar mass calculate करना है moles 4.2 है, लेकिन molar mass इस केस में Cl2 का लिया जाएगा जो है 35.5 multiplied by 2. Done? और इस केस में you're gonna take 4.2 and multiply it with 35.5 only, and you're gonna get the answer. जाऊँ आगे? Find the number of atoms. निकालिए जी. Atoms equals मोल टाइम्स सोडियम की बात हो रही है, सोडियम एलिमेंट है. मोल टाइम्स 6.02 इंटू 10⁻23 3.1 मल्टीप्लाइड बाय दिस. कर सकते हैं आप लोग खुद. फाइंड मोल्स और एटम्स गिवन है तो बस रिलेशनशिप लिखा करें. एटम्स इक्वल्स मोल टाइम्स 6.02 इंटू 10⁻23. हाँ जी, तो ये 2.05 आपके पास एटम्स हैं, मोल्स निकालने हैं और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 6.02 इंटू 10⁻3, लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा. डन. फाइंडिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये बाकी आप खुद कर लीजिएगा. फाइंडिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, निकालें जी. मॉलिक्यूल्स हैं Cl2, Br2, H2, ये हैं भी मॉलिक्यूल्स. तो मॉलिक्यूल्स इक्वल्स मोल्स कितने 11.4 और मल्टीप्लाई कर दें, ठोक दें ये नंबर, खत्म. बढ़ूँ आगे. 2.5 मल्टीप्लाइड बाय. अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता वो कह देता था फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 2.5 मोल्स ऑफ Br2, एटम्स ऑफ Br निकाले, फिर क्या करते हैं? 2.5 टाइम्स 2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23. डन. इतना प्रोसेसर हमारा काम कर रहा है गाइस. खुदा ना खास्ता अगर वो कहता कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 2.5 मोल्स ऑफ Br2, तो क्या करते? पहले मोल्स ऑफ एटम्स निकालते. 2.5 टाइम्स 2, 5 मोल्स ऑफ Br है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करते 6.02 इंटू 10⁻23. खत्म. जरार खान, ये ऊपर हम यही कर रहे थे ना चीते, ये देखो ना यार, ऊपर हम सारा यही हिसाब किताब कर रहे थे. किधर गए? ये देखो, पहले मोल्स निकालते थे एटम्स के, फिर नंबर ऑफ एटम्स निकालते थे. पहले मोल्स निकालते थे एटम्स के, फिर नंबर ऑफ एटम्स निकालते थे. हैं, ये इधर किया हुआ है. ये देखो, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सी फाइंड करें तो पहले मोल्स ऑफ सी निकालो, फिर एटम निकालो. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं तो पहले मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालो 10 और फिर नंबर निकालो. डन. चलो. अच्छा, वन क्वेश्चन. ये सारे बच्चे फाइनल के बैठे हुए हैं ना, मई जून 2025 में अपीयर होंगे. आर ऑल स्टूडेंट्स हियर गोना अपीयर इन मई जून 2025? चलो, ऑसम. अच्छा, ये इतने ज़्यादा यस आ गए, अभी तक सारे खामोश. अच्छा, समझ भी कुछ आ रही है कि नहीं? ऊपर से टाप रहा है. चलो जरार खान, आपने पहली क्लास ली हुई है? चलो, ये दोबारा वीडियो देख लेना है, दोबारा देख लेना एक दफ़ा. अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स. एटम्स निकालो भाई जी. मोल्स मल्टीप्लाइड बाय दिस पैथेटिक नंबर. इसको हम एवोगाड्रोस कांस्टेंट भी कहते हैं, बिकॉज लिटरली दैट वाज द गाय हु केम अप विद इट. लोरेंजो अमियादो समथिंग समथिंग एवोगाड्रो नाम था उसका. बड़ा आसान है यार, मैथ्स है. फाइंड द मोल्स ऑफ Br2 इन दीज मैनी मॉलिक्यूल्स. तो मॉलिक्यूल्स गिवन है, मॉलिक्यूल्स इक्वल मोल टाइम्स 6.02 इंटू 10⁻23. इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड हो जाएगा भाई, यही है. तैमूर कह रहा है बस अभी सब्र करो, मैंने कॉन्सेप्ट भी देना है एक दो. ख़त्म, सारे सवाल मैंने कर लिए हैं, जान छुट गई है. 2-3 आप पे भी छोड़े हैं. फाइंड द वॉल्यूम. वॉल्यूम निकालो. V इज इक्वल टू n टाइम्स 24 DM क्यूब में. तो सारा ही आसान है. अच्छा, वॉल्यूम कितना है? 2 मोल्स अच्छा, कह रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब में निकालो. अच्छा सॉरी, मोल्स नहीं पूछ रहे, कह रहे हैं फाइंड 2 डेसीमीटर क्यूब इन सेंटीमीटर क्यूब. तो भाई 2 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करें 2 टाइम्स 1000, व्हाट यू गेट? 2000. और जिनकी मैथ्स कमज़ोर है तो उनके लिए मैं कह देता हूँ 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब. So 2 decimeter cube would be equal to how many centimeter cube? Cross multiply, x is equal to 2, x multiplied by 1 is equal to 2 multiplied by 1000. X multiplied by 1 is x and 2 multiplied by 1000 is 2000 centimeter cube.
हाँ जी, ये CI की सवाल है, वो मेरे से ही छाप देते हैं। अच्छा, कैलकुलेट कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर क्यूब। 1.5 को अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है तो 1000 से मल्टीप्लाई करें। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब हैज़ 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 1500 आता है। लेकिन अगर नहीं समझ आ रही तो 1 DM क्यूब में 1000 CM क्यूब होते हैं, तो 1.5 में कितने होंगे? कुची कुची क्रॉस मल्टीप्लाई तो सॉरी, छोटू नन्ना सा बच्चा, मेरा प्याला बच्चा। डन, आगे बढ़ूं? या आप लोग खुद निकालिए। अच्छा, इसको सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें। 5400 CM क्यूब इंटू डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000, सो यू आर गोना गेट व्हाट? 5.4 DM क्यूब। अच्छा, जिसकी मैथ कमज़ोर है तो उसके लिए मैं दोबारा बता देता हूँ। 1 DM क्यूब हैज़ 1000 CM क्यूब, so how many DM क्यूब will be there in 5400 CM क्यूब? Cross multiply x multiplied by 1000 equals 5400 multiplied by 1. X is equal to 1000 is multiplying here, there it will be divided, so divide by this। हाँ जी। और अच्छा, थोड़ा चिल करें, थोड़ा चिल कर दें, ओके, कितना धीरे बोलूं। अच्छा, और जिन्होंने पॉश स्कूलों से पढ़ा हुआ है तो उनको ये समझ आ रही होगी कि ये एक्चुअली ऐसे नहीं होता। मैथ्स कहता है कि जो चीज़ अब ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड ऐसे नहीं होता, ये बेसिकली डिवाइड बाय 1000 और बोथ हैंड साइड्स होता है। तो जिन्होंने पॉश स्कूलों में पढ़ा है वो ऐसे कर लें, जिन्होंने हमारी तरह मैट्रिकों में पढ़ा है वो ऐसे कर दें। मैंने मैट्रिक में नहीं पढ़ा, मेरे ओ लेवल में 8 A स्टार 2 A थे, ए लेवल में स्टार्स थे। मैं मैट्रिक में नहीं पढ़ा, लेकिन सरकारी स्कूलों में भी मैं पढ़ चुका हूँ, तो हिसाब किताब हमें पता है। अच्छा, बाकी तो आप कर सकते हैं। अच्छा, करें करें करें, फाइंड द वॉल्यूम। अच्छा, ये इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो जी, फाइंड वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब इन 3.6 मोल्स। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल टाइम्स 24। मोल्स कितने हैं? 3.6 को 24 DM क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छी बात है यार। अच्छा, फाइंड द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। इतने मोल्स हैं तो वॉल्यूम इक्वल्स मोल टाइम्स 24। 24 के 24,000? 24 और 24,000? 24,000 CM क्यूब, राइट? तो वॉल्यूम निकालो जी, मोल्स कितने? 0.67 मल्टीप्लाइड बाय 24,000, यूर गोना गेट द आंसर है। वॉल्यूम इन CM क्यूब तो 4.55 मल्टीप्लाइड बाय 24,000। वॉल्यूम इन DM क्यूब तो 9.23 मल्टीप्लाई बाय 24,000 और 24,000। 24 नहीं होता बेटा, 24 होता है। ओके। अच्छा, फाइंड द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल टाइम्स 24,000। वॉल्यूम निकालें 1.24 से 24। बर्गर 24 से 24, ओ माई गॉड, 24 या 24। ओके, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 24,000 है। करूँ जी, क्या आ रहा है? करो जी। 34800, सॉरी। गला दबा दूंगा सबका मैं। इट्स H2O लिक्विड, प्लीज, इट इज अ लिक्विड। अ मोल डज नॉट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस 50 दफा, सॉरी, द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, इट ओनली रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। 100 दफा कह चुका हूँ, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। हाँ जी, मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कर सकता। तो इसमें लिखना है नॉट, एग्जाम में लिखना है नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, डन। हाँ जी, तो H2O लिक्विड है, ये एग्जाम में आएगा नहीं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये तो कॉन्सेप्ट के लिए मैंने डाला। You can only represent the volume of a gas at room temperature and pressure. A mole can only represent a volume of gas at room temperature and pressure, that is 24 DM क्यूब or 24,000 centimeter क्यूब। डन, खत्म। अब देखें, ये गैस है तो DM क्यूब में निकालें 2 × 24, दैट्स गना बी 48 DM क्यूब। यार दरार, ये म्यूट कर दो माइक यार अपनी। सर, एग्जामिनर को लिख लेंगे डू इट योर सेल्फ बेटा, फिर वो भी आपको लिखेगा।
No, don't ask a stupid question, please. Let me just complete this first. Okay, find the moles of 3200 centimeter cube of N2. V is equal to N times 24,000. V is what? 3200 moles you need to find. 24,000 is here. Divide करें उधर. ये करें exactly same. ये करें. अच्छा, find the moles of 3.5 dm cube of Br2 gas. Can I calculate the moles? Moles equals नहीं. V is equal to N times 24. 24 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इट्स इन डी एम क्यूब ना. अगर सी एम क्यूब होता 24,000 लिखता. वॉल्यूम हमारे पास है 3.5. एन इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई 24. एन इज इक्वल टू 3.5 डिवाइड बाई 24. वट एवर यू गेट. अच्छा, कर सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब में मोल्स निकालने हैं. वी इज इक्वल टू एन टाइम्स 24,000. सर वी कैलकुलेट मोल कैलकुलेट करने. वी दिया है 2800. एन टाइम्स 24,000. n is equal to 2800 divided by 24,000. Sorry for my pathetic handwriting, I just can't be bothered. Done. Done. अच्छा, अभी तक ना हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़े. 5वां कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ कि नहीं? बस ख़त्म. कॉन्सेंट्रेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ा दूँ. कल से फिर हम सारे सवाल करना शुरू कर देंगे. हैं? पढ़ा दूँ? ओके, जस्ट 1 सेकेंड प्लीज. पढ़ा दूँ? नहीं? अच्छा, लेट मी जस्ट गिव यू गाइस अ क्विक समरी देन. Mole represents 3 things. It represents a number which is 6.02 into 10 is about 23. This can literally be anything. It represents the volume of a gas at room temperature and pressure, which is 24 decimeter cube or 24,000 cm cube. And it also represents molar mass. It also represents molar mass and you can calculate mass from it, right? So if you want to get mole को हम n से represent करते हैं. So if you want to calculate the number, you'll take the moles times it by this. If you want to calculate the volume, you'll take the moles times it by 24 or 24,000 cm cube. If you want to calculate the mass, take the moles times it by the molar mass. Yes, इसमें एक further addition हमने की है. वो क्या है कि if these are God forbid molecules, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की हो रही, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 इंटू 10 power 23. बट इफ आई वॉन्ट टू फाइंड द एटम्स in 4 moles of carbon dioxide. Now since carbon dioxide is a molecule, atoms तो इसमें है नहीं, ये तो molecule है, तो सबसे पहले moles of atoms निकालें. 4 into 1 and 4 into 2, तो it gives you 12 moles of atoms. 12 moles of atoms आ गए. फिर इसको 6.02 into 10 power 23 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे. ये एक चौथा रिलेशनशिप है जो आज हमने पढ़ा है. बस यही पढ़ा है और तो हमने सवाल किया है. अच्छा, आप लोगों का होमवर्क क्या है? क्लास वर्क. द क्लास वर्क इज ऑलवेज द होमवर्क. तो आज जिधर ये 4.0 से पहले पहले सारा कंप्लीट करना है. कल कंप्लीट होना चाहिए. देखो ये वाहिद चैप्टर है जिसमें आप लोगों ने थोड़ा काम ज़्यादा करना होता है. काम क्या ज़्यादा, सारा तो मैंने कर लिया, बट यू जस्ट हैव टू रिपीट इट. ठीक है जी. अब पूछिएगा सवाल जो है. लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग. यू